Good morning, children. Today we will continue General Science, Chapter 6 Strong, Healthy Teeth. Do you remember we already did about permanent teeth and milk teeth? Permanent teeth, we have 28 permanent milk teeth and 32 permanent teeth. We also did the four parts, different parts of a tooth, structure of a tooth, which has enamel. The white color which you can see is the enamel. Then you have dentine, which is the yellow color. Then you can see the pulp here. Pulp is contains blood, veins, which is in blue and green and red color, and then you can see the root which holds the tooth. This is called the root. We did till here. Then we also did different types of teeth. There are 4 different types of permanent teeth. They are incisors, canines, premolars and molars. So we did this also yesterday. Today we'll continue with why brushing keeps teeth healthy. We need to brush our teeth regularly, once in the morning and once at night. ये आपको पता ही है. टीथ को ब्रश करना होता है, एक मॉर्निंग में, एक बिफोर गोइंग टू बेड. एंड वी मस्ट ऑल्सो रिंस आर माउथ. हमें अपने माउथ को भी रिंस करना चाहिए, मतलब वॉश करना चाहिए आफ्टर एवरी मील. हर खाने के बाद आपको कुल्ला करना चाहिए. द मीनिंग ऑफ रिंस इज कुल्ला. इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ आर टीथ, दे मे बिगिन टू टर्न येलो. अगर हमने टीथ का ध्यान नहीं रखा तो वो येलो कलर का हो जाएगा. एंड वाई इट टर्न्स येलो? बिकॉज दिस इज ड्यू टू द लेयर ऑफ प्लेक दैट फॉर्म्स ऑन डर्टी टीथ. येलो कलर इज ड्यू टू द प्लेक. प्लेक जो फॉर्म होता है हमारे टीथ में, उससे हमारा टीथ येलो कलर दिखता है. प्लेक कैन लीड टू गम डिजीज. जो आप ब्रश नहीं करोगी प्रॉपरली एंड द टीथ टर्न्स येलो एंड इट प्लेक अकर्स ऑन दैट एंड इट प्लेक विल कॉज गम डिजीज. गम्स मतलब मसूड़ों का जो भी प्रॉब्लम होता है. गम इज मसूड़े. मसूड़ों में जो भी डिजीजेस होता है दैट इज ड्यू टू द प्लेक. एंड इवन कैविटीज विल बी फॉर्म्ड. व्हाट विल बी फॉर्म? Cavities. Now this is the cavity. Can you see the black color forming on your teeth? That is the cavity. In the beginning cavity is here. After some time cavity becomes bigger. Then after sometimes it becomes more bigger. And then it turns so big and it goes down till the roots. These gum diseases and cavity cause to rot and fall of teeth. If you have that gum disease and the cavity, your teeth will rot. rot मतलब सड़ जाएगा and it will fall down. Now see the picture, children, how you have to brush your teeth. You have to brush your teeth up and down. You have to brush your teeth back and forth. You have to brush your teeth behind the teeth also. You have to do your brushing. Correct way to brush your teeth. You see this picture and then start brushing your teeth like this, children, and teach your younger brother and sisters also how to brush their teeth. Brushing as shown in the picture removes bits of food that may be stuck to the teeth. Use a soft brush and brush gently so that your gums do not get hurt. Why do you think this food should be removed? Children, why do you think we have to remove the food? We have to remove the food. If we don't remove the food, bacteria will enter our mouth. Food should be removed because bacteria need food. Bacteria मतलब germs and bacteria. They need food. उनको क्या क्या चाहिए होता है bacteria को? Food, warmth, air and moisture to grow. उनको क्या क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, वार्मथ मतलब गर्मी चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है, मॉइस्चर मतलब गीला. योर माउथ इज ऑलवेज गीला, नो? इट हैज़ गॉट स्पिट इनसाइड. थूक है आपके माउथ में तो इट इज़ ऑलवेज हैविंग मॉइस्चर. अ माउथ गिव्स देम एयर, वार्मथ एंड मॉइस्चर. इफ बैक्टीरिया ऑल्सो फाइंड फूड ऑन द टीथ दे कैन ग्रो वेल. उनके पास 3 चीज़ें तो ऑलरेडी है. अगर आपने फूड भी दे दिया तो वाह वाह, मज़े ही आ गए. उनको तो बहुत बड़ा डिनर हो गया. Once bacteria start growing there, they make little holes or cavities that I have already told you on the surface of the tooth. They now travel through the dentine to the pulp, making the cavity bigger and bigger. The tooth starts paining and we have to visit a dentist. The dentist fills up the cavity, but if bacteria continues to make cavity,
the whole tooth rots and has to be pulled it out. If it is a permanent tooth, there will be no new tooth to grow in its place. Now, can you see the children? I told you already, first the cavity will form, and this cavity, it will start traveling down to dentine, then it will start going to the pulp, and then it will start traveling towards the root, and it will rot the tooth completely. And the doctor, you have to go and show it to the dentist. Severe pain होना शुरू हो जाता है. Then you have to go to the dentist, और dentist से जाके आपको अपना दांत निकलवाना पड़ता है. And if you are having a milk teeth, it is okay, new teeth will come. But once it is a permanent teeth, no teeth is going to come after that. Next, children, we'll start with bacteria, viruses and protozoa. Bacteria, viruses and protozoa can cause diseases. These three are also called germs. All these three are called germs. So first let us read about bacteria. Bacteria are very tiny living things. They have only one cell. They can be seen only under a microscope. Bacteria live in plants and animals. When they want to reproduce, they just split into half. Bacteria cause infectious diseases such as typhoid, tuberculosis, pneumonia, acne, and so on. Children, can you see the different kinds of bacteria? Look at the picture. Bacteria, I have told you just now, I read it out. ये बहुत tiny होते हैं, ये माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखते हैं. और बैक्टीरिया कहाँ कहाँ रहते हैं? They live in plants and animals. और जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जब वो डबल हो जाते हैं, जैसे एक बेबी, अ डॉग गिव्स अ बेबी डॉग, नो pup, no. So in the same way they also do. Cat gives a kitten, in the same way they also reproduce. When they reproduce, they just split into two. वो एक होते, वो क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं. उनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? They split into two half. और बैक्टीरिया से बड़े इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं. They have told you, जैसे tuberculosis, pneumonia, acne and typhoid. ऐसे तरह की बीमारियां बैक्टीरिया से ही होती है. Some bacteria are useful. Here are some ways in which they help us. They turn milk into cheese, curd and cheese. They break down the food we eat and help us to digest it. This is done by thousands of bacteria that live in the stomach. In the same way, bacteria in the stomach of animals help them to digest their food. When a plant or animal dies, certain bacteria help it to rot. जब प्लांट और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो कुछ बैक्टीरिया उसे सड़ाने में मजबूर कर देती है. These bacteria break down the dead body into very tiny particles. तो ये बैक्टीरिया क्या करती है? इन जो डेड बॉडी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में छोटा छोटा टुकड़ा बना देती है. The dead plants or animals thus mix with the soil and make it fertile. और ये जो plants और animals हैं वो soil में मिलके इसको fertile कर देती हैं. Next is virus. A virus is even smaller than bacterium. Viruses are found everywhere. They come to life only when they are inside the cell of a living body. जो ये वायरस होती है वो उनमें लाइफ कब आती है? जब वो लिविंग बॉडी के अंदर रहती है तब. दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस हियर. वो लिविंग बॉडी के अंदर रह के वहीं पे रिप्रोड्यूस करती है. दे कैनॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस व्हेन दे आर ऑन देयर ओन. उसको अगर बाहर छोड़े तो वो कभी भी रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाती है, कुछ भी नहीं कर पाती. अगर लिविंग हमारे बॉडी के अंदर कोई वायरस आ जाता है तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाती है. So scientists are not sure whether to call them living or non-living thing. इसलिए साइंटिस्ट को पता ही नहीं उसे लिविंग कहना चाहिए या नॉन लिविंग कहना चाहिए. Viruses cause disease such as common cold, measles, AIDS, chicken pox and smallpox. Just now what is this pandemic? COVID is going on, no? That is also a kind of virus which is gets inside the body and then it starts reproducing. वही है आजकल जो चल रहा है कोविड में जो है वही है ये वायरस. Protozoa are bigger than bacteria but are very tiny. Some of them can
cause diseases such as malaria, dysentery, dengue fever etc. तीसरा जो है प्रोटोजोआ है, दे आर बिगर देन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से बड़ा है बट फिर भी बहुत छोटे हैं. सम ऑफ देम कॉज डिजीज़, वो कई डिजीज़ करते हैं ये प्रोटोजोआ, जैसे मलेरिया होता है, डिसेंट्री होती हैं, डेंगू फीवर होता है, दिस इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. एंड वायरसेस से अभी जो कोविड है दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायरस. So with this, I hope you all are clear with the chapter. So I'll be sending you the PDF, question answers, fill in the blanks. Please do it very nicely, neatly and clearly. This part we will not be doing where I have put across, that you don't have to do. Okay children, are you clear with useful bacteria also that turns milk and milk into curd or cheese, and even virus and protozoa. So thank you children. Take care, stay safe and blessed. God bless you children.